+2 class. Next topic is development of ovule. Ovule is developed as प्राइमोर्डियम. प्राइमोर्डियम होता है प्रिमिटिव स्ट्रक्चर. कौन सी सेल हैं जो ओव्यूल बना रही हैं? दीज आर द सेल ऑफ न्यूसेलस. दीज सेल ऑफ न्यूसेलस दे माउंट देमसेल्फ. कहाँ पे आएंगी? प्लेजेंटा के साथ अटैच होंगी जब ये ओव्यूल फॉर्मेशन करेंगी. और इनके जो इंटेग्यूमेंट है, अभी आपने ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा है, इंटेग्यूमेंट पढ़े हैं, तो ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट अराइज होंगे बेसल रीजन से, दैट इज कॉल्ड चिलासा. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट हाउ देयर इज formation of this megaspore mother cell. If we talk about in the hypodermal region near the micropyle, there is formation of archisporial cell. ये मैं सेल ड्रॉ कर रही हूँ एक. This cell is called archisporial cell. This archisporial cell it divide into 2 cells. ये ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ माइक्रोपाइलर रीजन है. दिस इज माइक्रोपाइलर रीजन. दिस सेल इज कॉल्ड, जैसे हमने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ पोलन सैक, सेम हियर. दिस सेल इज कॉल्ड archisporial cell, give rise to 2 cells. This is called parietal cell, or it is called wall layer cell, and this is sporogenous. Sporogenous cell. अगर हम बात करते हैं एंथर की, तो एंथर में जो स्पोरोजीनियस सेल है ये डायरेक्टली माइक्रोस्पोर मदर सेल में डेवलप नहीं होगी. अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ओव्यूल की और डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर और डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसैक, दिस स्पोरोजीनियस सेल इट डायरेक्टली एक्ट एज मेगास्पोर मदर सेल. मेगास्पोर मदर सेल it is diploid so it undergo meiosis to form the tetrad of cell. It form this tetrad of cells. From these tetrad of cell, 3 cells which are toward the micropylar end, they disintegrate, and only 1 cell toward the chilasal end, it remain functional and increase in size. ये दिखाया है आपको. Disintegration of the cells which are toward the micropyle, and this cell it get enlarged, its nucleus divide into 2, and these 2 shift to opposite poles. This is mitosis. This is first mitosis. Then next further division. This is second mitosis, formation of 2 nuclei at each pole. Then third division. This is stage number 1, stage number 2, stage number 3. These 2 nucleus they further divide into 4 on both the poles. Formation of 4 nuclei. Then next, now these nucleus they shift toward the center, 1 from each pole. हर पोल से एक न्यूक्लियस सेंटर की तरफ जा रहा है. हमने इसको थोड़ा माइक्रोपाइलर एंड की तरफ दिखाना है. These are called polar nuclei. अब एक इधर से गया, एक इधर से गया, यहाँ 3 रह गए हैं. वो 3 क्या बनाएंगे? Formation of these synergy which are having the filiform apparatus, and this is egg,
and all these three they join to form egg apparatus and here is formation of, यहाँ भी तीन रह गए हैं जो क्या बना रहे हैं एंटीपोडल सेल्स. दिस इज फर्स्ट archisporial cell we divide into parietal and sporogenous cells. Sporogenous cell directly act as megaspore mother cell, divide into four. Here the division is meiosis and ploidy of these four cells they are haploid. Out of these three disintegrate and when enlarged toward the chalazal end, its nucleus first divide into two. First mitosis, second mitosis 4, third mitosis 8. Out of these 8, one nucleus from each pole come to the center. These are called polar nuclei and these three cells they form the egg apparatus. In egg apparatus two are the synergid and one is egg cell and three cell at the opposite pole they form the antipodal. Antipodal are called helper cell. This is how the development of female gametophyte take place. Our next topic is double fertilization and triple fusion. In double fertilization and triple fusion, suppose we talk about ovary. डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, आपने ओव्यूल का डायग्राम अभी बनाया है. दिस इज स्टिग्मा. Here are present the embryo sac. ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल होंगे, हर एक ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक होगा. यहाँ हम एक की बात कर रहे हैं. These are synergid. This is egg. These are three antipodals. Then these are two polar nuclei which are called secondary nucleus. Here are present filiform apparatus. Then these are integument, inner integument and outer integument. यहाँ हमने अभी न्यूसेलस शो नहीं किया है इसमें. जस्ट दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. यहाँ बहुत सारे पोलन ग्रेन आ गए हैं. दिस इज द लैंडिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ pollination. Stigma is the landing platform for the pollen grain. Now what happen on the stigma, there is present the sticky fluid, that is nutritive fluid, which is absorbed by pollen grain. Pollen grain they absorb the nutritive fluid. After absorption of nutritive fluid there is swelling in pollen grain. After swelling there is bursting in pollen grain. Only the pollen grain that is compatible. कंपेटिबल का मतलब जिसमें पिस्टिल पोलन इंट्रैक्शन कंप्लीट हो गई है विद द हेल्प ऑफ जीन्स विच आर प्रेजेंट इन दिस पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा. इफ इट इज कंपेटिबल देन ओनली इट इज अलाउड टू ग्रो एंड ऑल द प्रोडक्ट ऑफ पोलन ग्रेन दे कम इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब. And this pollen tube it is glandular, absorptive and secretory. It secrete the enzyme which help in eating away the cells present in this style so that it travel its path. It is having the tube nucleus at the tip followed by two male gamete and movement of pollen tube is called chemotropic movement. Come here. Then next this pollen tube go on moving, come to the micropyle. It is also due to the chemicals. And just when the pollen tube come here, tube nucleus will disintegrate, खत्म हो जाएगा. अब एक सिनर्जिड, अब अगर हम बात करें सिनर्जिड की, एग की, इन न्यूक्लियस की, इनकी, इन सब के बीच में प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन भी है. इन सब के बीच में कम्युनिकेशन भी हो रहा है. एंड दिस कम्युनिकेशन इज विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स. अब इसमें बच गए हैं टू मेल गैमीट. ट्यूब न्यूक्लियस खत्म हो चुका है. वन ऑफ द मेल गैमीट फ्यूजेस विद एग एंड दिस सिनर्जिड डिसइंटीग्रेट. फिलीफॉर्म अपरेटस गाइड प्रोवाइड करेंगे और एक जो मेल गैमीट है दैट फ्यूजेस विद एग. जैसे ही पोलन ट्यूब अपना सारा मटेरियल यहाँ डाल देगी, लोड कर देगी,
this synergy will also disappear. And second male gamete come here. Then this is fusion of egg and one of the male gamete. Actually this is the sexual reproduction and it results in formation of zygote. If we talk about here, these are the two secondary nucleus and one of the male gamete fuses with this. This is formation of PEN. Primary endosperm nucleus, its ploidy is 3N, N, and N. Its ploidy is 2N. If we talk about this primary endosperm nucleus or the endosperm, that is the food containing structure in the monocote. If we talk about gymnosperm, in gymnosperm, this endosperm is haploid because it is formed before fertilization. And if we talk about angiosperm, in angiosperm, endosperm is triploid. Endosperm is the main structure which stores the food material and it provides the food material to the developing embryo. Then first there is development of endosperm. Then there is development of zygote to form the embryo. Endosperm feed on nucellus and zygote or the embryo feed on endosperm. If we talk about the dicote, there is no remaining endosperm except some plants and all the food material that is stored in cotyledons. If we talk about the monocote, whole of the food material that is stored in endosperm. Our next topic is embryogenesis, that is the development of embryo.